नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये एक अनोखा अभियान है जो हम हमारी संस्कृति को, हमारी ज्ञान परंपरा को समझने समझाने के लिए आप सबके लिए लेकर आते हैं। और ये प्रोग्राम हर रविवार सायंकाल 6 बजे वार्तिक टीवी पर आपके समक्ष हमारे सभी विद्वत पैनलिस्ट भी होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का ये जो यज्ञ है, ये अनवरत रूप से जारी है। और इस यज्ञ में आज भी आहुति देने के लिए हमारे साथ इस ज्ञान सत्र में नई दिल्ली से जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा हमारे साथ हैं। ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, जो कि गीता की निष्णात आचार्य हैं, अध्येता हैं, अध्यापिका हैं और जापानीज स्टूडेंट्स को गीता उपनिषद का अध्ययन अध्यापन करवाती हैं। ऐसी आचार्य राधा जी हमारे साथ हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर व एमिनेंट कॉलमनिस्ट मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीमान विठल जी नाडकर्णी। भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका रहने वाले मशहूर वैज्ञानिक, एमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यूएसए से ही हमारे साथ होंगे प्रख्यात प्राध्यापक, एमिनेंट प्रोफेसर अनिल जी भाटे। बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। और नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे, श्रीमान जे.के. दादू जी। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड की एक भावभूमि हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, संक्षिप्त ब्यौरा आपके समक्ष रख रहे हैं। आज जो एपिसोड है वो चैप्टर 8 के श्लोक संख्या 15 से 19 का है। श्लोकास 15 to 19 आज हम टेकअप कर रहे हैं। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि गीता उपनिषद हमारी ज्ञान परंपरा अति विलक्षण है, इतनी विज्ञानमय है कि हम केवल सोच भर सकते हैं। इसके इतने आयाम हैं और ये सभी आयाम, गीता उपनिषद चूंकि हमारे समस्त वांग्मय का सार तत्व है, अमृत तत्व है, मक्खन है, इसलिए गीता उपनिषद में यह सब आपको देखने सुनने को मिलता है। आज के इस एपिसोड में भगवान बताने वाले हैं कि किस तरह से क्रिएशन, यानी सृष्टि में, कॉस्मोस में जो भी कुछ है, व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, जो बनाया गया है, मतलब कुल मिला के जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है, वो एक समय सीमा में है, एक काल की उसमें है, एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में है और उसकी एक नियत समय सीमा है, लिमिटेशन है हर चीज की। कॉस्मोस में जो भी चीज है, ब्रह्मांड में जो भी कोई चीज है, इस सृष्टि में कुछ भी है, वो सब टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के तहत है और उसकी एक समय सीमा है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि जो सृजित की गई है, इसमें जितने भी लोकालोक भी हैं, वो भी, यानी ब्रह्मलोक तक भी इस टाइम की सीमा में आते हैं, इस समय की लिमिट में आते हैं। और यहां ये भी आज के इस एपिसोड में जानने समझने को मिलेगा कि केवल परम पिता, परम तत्व जो हैं, वो कालातीत हैं, वो इस समय से परे हैं, ऊपर हैं, वो नित्य हैं, बाकी सब अनित्य हैं। ये विलक्षण एपिसोड आज का इस तरह से रहने वाला है और समय सीमा से किस तरह से परे है, ये भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आज के एपिसोड में हमारी जो सनातनी कालगणना है, उसका भी एक विलक्षण स्वरूप आपके सामने, एक विलक्षण दर्शन आपके सामने आने वाला है, जहां क्रिएटर, करतार ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा जी का एक दिन, इसकी कालगणना आज समझ में आने वाली है। और फिर रात, तो ये जो ब्रह्मा जी के एक दिन का, एक रात का क्या विस्तार है, कितना विस्तार है, यह आज के एपिसोड में हमें जानने को मिलेगा। आज हमारे विद्वत पैनलिस्ट इस काल गणना का ये जो विलक्षण स्वरूप है, ये हमें समझाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। नाउ विदाउट ए फर्दर ड्यू, वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रामनाथ जी झा, आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मोस्ट वेलकम।
दरबार साहब के पास चलते हैं। दरबार साहब स्वागत है, नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिए तो। हरिओम। हरिओम, नमस्कार। नमस्कार। यू स्टार्टेड बाय सेइंग मजबूरी है, कैलेंडर को टर्न करना पड़ेगा। और दो इट इज नॉट अवर सनातनी नववर्ष, वी हैव आवर ओन न्यू ईयर, बट ये मजबूरी है कि बिकॉज ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, एंड आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश, so it is customary to wish, whether we like it or not, we'll have to accept several things in life, and then we are obliged to follow. Like Balram Sahab is saying just now, based on what has been explained by our panelists, as well as what has been there given by the rishis and munis, the magnitude, the humongous and gargantuan proportions of the sense of time in terms of the yugas and then the manvantaras and then the kalpas. So happy new year to everybody who is watching and who is sitting here. Having discussed the fundamental aspect of our Sanatana, we are discussing about Sanatana and Bhagavad Gita. So the fundamental of Sanatana vis-a-vis the other Abrahamic religions is the concept of the rebirth and punarjanma. In two slokas with the same words, the Lord had explained Mamupetya and then punarjanma, one place, and then punarjanma navidyate. That's what he is also saying. Again Mamupetya is saying. So, what is this punarjanma thing, the reincarnation, that would make the fundamental aspect of the faith and the way of living for the Sanatanis or the Hindus vis-a-vis the others. Others may not have that kind of a concept, and probably there are hedonists. And earlier, some 4 or 5 episodes back, we had a discussion and some disagreement about the other hedonists who follow, they live by the day as if this is only permanent. In the whole thing, the magnitude of the sense of time, as explained, what is that a lesson for us who are living as human beings on the earth? Because by looking at that the magnitude, we understand that how small a speck we are. But still we think that हमारी खुद का built up by our own self built up अहंकार and then the arrogance, whatever जो materialistically हम लोग प्राप्त करते हैं, उन्हीं के भास घमंड हो जाते हैं और वो गर्व बढ़ जाता है, and we think that there is no end for ourselves. When we look at the magnificence of the time and then the space and the omniscience and omnipresence of the great super consciousness and then the Lord. When we explain about the yugas and manvantaras and kalpas and all, it may look like that, kya yaar, what is this? ये सब कहानी है, पुराणों में लिखा हुआ है, like that. But when some scientific person, a video which comes in English by saying that some Andromeda galaxy or some other Milky Way galaxy and some light years and then galactical years and things like that. Oh wow, what a scientific thing! And then and how small. Still, the residual feeling is the same. And hence, what the lesson that I understand, and then I wanted to tell here, share here, is the humility that is required. How small a person are we on the face of the earth, and then how big is the universe, the Vishwa, that is the Vishwam Vishnum Vachatar. That is the having discussed about the magnitude of the time and the space. And the time and space also, our people, for our understanding, they have given two forms. एक जगह महाकाल बोलते हैं, when we call it to Rudra and then Shiva. The other place, like Vithalji said, Kalosmi, he said, Vishnu is saying that I am the Kala, whereas the meaning of the Vishnu is space and Kala is the time. So who is the time and then who is the, without getting into that division and then the controversy, because at the end of the day,
Shivaya Vishnu Rupaya Sivarupaya Vishnave. Ardhantaram napashyami tadhame swastiraishi. Everyday prayer we say that. And hence, at the end of the day, at a philosophical level, whether it is Shakti or Purusha or Prakriti or Shiva, Vishnu, it is all same. So then, what is that we need to understand by Punarjanma and all? Because the existence of the rebirth is there, our whole karma and then the activity happens. In fact, even a Srishti is also an activity, it is the karma. So once the Mahayugas, Chaturyugas are dissolved, the Mahapralaya comes, again like everyday prayer we say that Dhata Yadha Purvam Akalpayat. In Agamarshan Sukta, when we say every day, Tancha Satchancha Bhi Dhatu, like that it starts, and then it says Dhata Yadha Purvam Akalpayat. That means he recreates the whole thing and then it's a cyclical form. So it is the impermanence. When it is changing every moment, then he is also said about Bhuta. That bhavati iti bhutaha, that which happens and then keeps changing is the bhuta. Bhuta. That's what he is talked about in the other shloka. So in that kind of a impermanence, we need to understand two key aspects as Sanatanis. One is the cause and then the effect. Karya karana sambandha. Karya karana sambandha. The cause and effect. Because Jaisi Karni Vaisi Bharni, as you sow, you reap. So the whole process of creation and then human activity is a result of the karmas that we perform. Whether so Kamayata, when he says that the Brahma or the Hiranyagarbha, the creator, when he creates, that is also an action, that is the first karma that he has done. And he is doing his duty, we have to do our duty. And in Karma Yoga, we discussed. So why do people do any particular action is, as I have explained in previous episodes, is that because of two reasons. One is Papa Bhiti and then Punya Preeti. Papa Bhiti is because if I don't do what Janma I will get, next Janma I may get as a mosquito or something like that. Everybody wants a better Janma. And Janma is, death is certain and then again Janma may be certain based on your own karma. So it is again linked to the cyclic process is linked to the karma. That's how I understand, I wanted to share. And hence it is important for everybody to do pious deeds in life because we have to relate it to our own lives and then apply Bhagavad Gita knowledge to our lives. So and hence people involve in good deeds and not to harm others and then do papa karma and sins. Right. Because basically Vaisi Bharni and that's what it takes. It's like a bank deposit. You deposit as you withdraw. So if the deposits are over, same thing, Kshine Punye Matyalokam Vishanti. Once the Punya deposit is over, again you will fall down onto the face of the earth in a different form of a Janma. That is the Punarjanma. So in order to get rid of this cycle of births and then deaths, for that only for departed souls also in Shraddha Karma when we perform, we say that Punaravritti Rahita Shaswata Brahmaloka Nitya Nivasas is their dham. Like that Sankalpa we say that. So we wanted them to go to that Brahmaloka and beyond to break the cycle. Only thing is Mamupetya. So that you surrender unto the God and the Lord and then understand the magnificence and understand your humility and align yourself. That's what makes us. The same thing is simply said in Adi Shankara's Bhajagovindam also because he is talking about Mahan. How suffering is there and then how people who मेरे को जानते हैं और मेरे निज स्वरूप को जानते हैं तो भगवान की निज स्वरूप को जानते हैं वो लोग ज्ञानी हो जाते हैं और उनका मुक्ति का पॉसिबिलिटी इज देयर बट जो उतना ज्ञानी नहीं होते हैं उनके लिए शंकराचार्य जी ने बोला है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे बहुदुस्तारे पाहि मुरारे like Bhajagovindam Modhamate. That's what he is addressing to the Modhamatis, oh stupid people, this is impermanence and this Punarjanma keeps on coming. Again you will have to be born either in the mother's womb or maybe in some other lesser wombs, we don't know. Why do you want to go to? Right. The only way is to Bhajagovindam. That's how it is said. That's how we need to understand and then align.